Let us start this first chapter. This chapter is electric charges and field, right? Now this chapter is one of the most important topic in your entire physics in class 12, right? Or in fact, अगर 11th 12th की computations levels पे बात करें, then also it is the most important topic, right? So let us start with what is an electric charge, basically. Electric charge, now this is the bookish definition, right? It is the intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to electric force between various objects, right? Now what do you mean by this? इसका मतलब क्या हुआ? It is the intrinsic property. Intrinsic means अंदरूनी, अंदर की property, right? It is the intrinsic property of elementary particles of matter, right? Elementary particles of matter. What do you mean by matter? Matter पता है ना? For example, our human body, this chalk, this board, this is matter, right? Elementary particles, that means इसके छोटे छोटे जो atoms और molecules होते हैं, उनकी अंदर की property होती है, right? Electric charge, which gives rise to electric force between various objects, right? इसका क्या मतलब हुआ? For example, you might have seen when you use a comb, right? You comb your hair and you basically put it near small pieces of paper. These pieces of paper get attracted towards the comb, right? ये जो छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स होते हैं, पेपर होते हैं, पीसेस होते हैं, ये कॉम्ब के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, ठीक है? देयर इज नो अदर फोर्स, कोई और फोर्स तो एक्ट करने के लिए है, सो देयर इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं. इस टाइप की जो फोर्स आती है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट? सो वी विल डू दिस इन अ लिटिल डिटेल इन दिस चैप्टर, ठीक है? अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं. सर्टेन पॉइंट्स आर देयर, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट point is that it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Scalar quantity. Now what do you mean by scalar quantity? Scalar quantity होती क्या है? We have seen this in 11th physics. Scalar quantities are the quantities which do not require any kind of direction. We do not have any kind of direction rather than require, which do not have any kind of direction. इनकी कोई direction नहीं है, ठीक है? For example, if this chalk is having certain charge, so we cannot say this कि this charge, this chalk is having a charge in the west direction or in the north direction. ऐसा कुछ नहीं होता, right? So it is a scalar quantity. It does not have any kind of direction, right? Second point is its SI unit. The SI unit of electric charge is coulomb. It's coulomb, right? Third important point is, now in electric charge you might be knowing this, you might have done this in class 10 कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और एक नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है? और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इनकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है? इनकी कुछ वैल्यू होती है. इनकी वैल्यू क्या होती है? ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट प्रोटॉन, ठीक है? प्रोटॉन इफ आई टॉक अबाउट, सो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज +E, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -E, एंड दिस E इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. ये E की सबसे छोटी वैल्यू होती है. दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? E की तो यही वैल्यू है, बट जो सबसे छोटी वैल्यू होती है पॉजिटिव चार्ज की, दैट कैन ओनली बी 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. It cannot be smaller than this. That means it cannot be 1.5 into 10⁻⁻19 coulomb. This can never be possible, right? So the smallest value of any charge, positive charge or negative charge, it can be plus or minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, right? So this is about a little basic thing, right? So let us move forward and let us come to conductors and insulator, ठीक है? अब conductors और insulators basically होते क्या हैं? The substances through which charges can flow easily are called conductors, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ यार कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब कंडक्टर हो गया. बेसिकली जिन चीजों को करंट लगता है या कि जिनके थ्रू करंट पास कर सकता है, करंट होता क्या है बेसिकली, राइट? व्हाट इज करंट? Current is basically the flow of electrons or the flow of charges, right? Flow of charges. This is the current. So the bodies from where the charges can flow easily. For example, our human body.
ह्यूमन बॉडी, राइट, हम लोग करंट आराम से फील कर सकते हैं, राइट. If we touch a wire, we get shock, we get electric shock. That means current is flowing through our body. That means the substances through which, our body is a substance through which charges can flow easily. The charge can flow easily. That is why we feel current, right? Human body, and what more? Metals, all the metals, almost all the metals, right? For example, iron rod, right? जब भी बेसिकली किसी को करंट लगता है, ठीक है, ये बोला जाता है कि आप उसको आयरन की रॉड से नहीं मारना होता, ठीक है ना, उसको हम लकड़ी के डंडे से मारते हैं. लकड़ी के डंडे से क्यों मारते हैं? बिकॉज अभी हम करेंगे इंसुलेटर. लकड़ी का जो डंडा होता है दैट इज एन इंसुलेटर, राइट. सिमिलरली आयरन जो है, आयरन इज अ कंडक्टर. ऐसे जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाई इज अ बॉडी कॉल्ड अ कंडक्टर? ठीक है, एक बॉडी जो है उसको हम कंडक्टर बोलते ही क्यों है? कंडक्टर्स आर द बॉडीज बेसिकली जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. freely available electrons are present. Now what do you mean by free electrons? Free electrons basically क्या होते हैं? For example, if I talk about a metal, कोई भी एक metal लेते हैं, metal कौन होता है? K plus, ठीक है, potassium basically. Potassium क्या करता है? It gives K plus plus electron. Now this is called a metal, right? Periodic table में the elements who are on the left side they are called as a metal, right? So now this potassium atom can easily give away electron, right? अगर कोई एक body है जो कि potassium की बनी हुई है, any body is there which is made up of potassium, now it can easily give away its electron. So all the metal bodies, they have the capacity to give away their free electrons. That is why they are good conductors of electricity. Because उस body के अंदर already अगर charges होंगे, तो अगर इस तरह से कोई charge आएगा तो आराम से move कर पाएगा, right? अभी हम इसको भी we will do this in detail also, right? So all the metals, all the bodies which have a good amount of large number of free electrons, they can be treated as conductors. Now what are insulators? This was the first thing. Now let us come to the insulators. The substances through which charges cannot flow easily. ठीक है, जिनके through charges flow ही नहीं कर सकते, they are called insulators, right? For example, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा wood, ठीक है ना, wood is an insulator. इसके थ्रू चार्ज पास नहीं कर सकता. So for example, अगर किसी को करंट लग रहा है, if you hit him with wood, तो आपको करंट नहीं लगेगा, राइट? आप उसके साथ नहीं चिपकोगे. अदरवाइज क्या होगा? आपने लेटेस्ट सपोज कोई आयरन रॉड ले ली और आपने उस बंदे को करंट लग रहा है एंड यू हिट हिम, व्हाट विल हैपन? करंट विल फ्लो थ्रू द आयरन रॉड एंड वो आपके थ्रू भी पास ऑन कर देगा, आपको भी करंट लग जाएगा, ठीक है? तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना, राइट? उससे बेटर तो काम क्या करना, जाके एमसीबी ऑफ कर देना अगर कभी करंट लगे, राइट? सो और अदरवाइज यू कैन यूज वुड, ठीक है? एंड और कौन कौन से होते हैं? ग्लास, ठीक है ना. ग्लास जो होता है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट मींस इट इज एन इंसुलेटर, ठीक है? वुड होता है, ग्लास होता है, डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इंसुलेटर्स की तरह काम करती हैं. मतलब इससे अगर आप उनको मारोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है? अब लेट अस आस्क यू कि वाटर जो होता है, वाटर, पानी, वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर? ठीक है ना. ऑब्वियसली इट विल बी अ कंडक्टर. क्यों? बिकॉज घर में सबने देखा होगा कि उनकी मम्मी वगैरह कहती हैं कि बेटा पानी में पैर मत रखना, ठीक है, करंट लग जाएगा, या कुछ ऐसा. वहां पे करंट वाली आइटम है, वहां पे पानी मत फेंको, करंट लग जाएगा अदरवाइज. बिकॉज करंट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां से इलेक्ट्रिक बोर्ड से इट कैन ट्रैवल इनटू योर बॉडी एंड यू कैन फील द शॉक, राइट? सिमिलरली आवर बॉडी बिकम्स अ कंडक्टर ऑल्सो बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, ठीक है? हमारी 70% बॉडी के अंदर वाटर है, इसलिए वी आर ऑल्सो अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ वाटर, राइट? सो दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अब इसके अंदर कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जो कंडक्टर बॉडीज होती हैं, कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं, उनमें क्या कंसेप्ट होता है कि when a charge is given to a conductor, when a charge is given to a conductor body, when charge is given to a conductor, it readily gets distributed over its entire surface. Is distributed
ओवर सरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर एक कंडक्टर है एंड वी हैव गिवन हिम सम चार्ज, लेट अस सपोज प्लस q, if charge is given, what will happen? This entire charge will go over the entire body. ठीक है, but what happens in case of insulators is that when a charge is given to an insulator, it is not distributed anywhere, right? So for example, there is a wood rod made of wood. If we give it a charge over here, plus q over here, so this will remain only over here. It will not get distributed, right? So this is one more property of conductors and insulators. And let us start with the next topic, which is basically the basic properties of a charge. ठीक है, इसकी चार्ज जो होता है उसकी तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है एडिटिविटी, सेकंड होती है क्वांटाइजेशन, और थर्ड होता है कंजर्वेशन, राइट? तो इसको देखते हैं कि ये होते क्या क्या है। एडिटिविटी का मतलब होता है द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेट अस सपोज एक बॉडी है, ठीक है, इतनी बड़ी सी बॉडी है, राइट? अब क्या हो रहा है कि यहां पर चार्ज पड़ा हुआ है प्लस q1, यहां पे चार्ज पड़ा हुआ है माइनस q2, यहां पे चार्ज पड़ा हुआ है प्लस q3, यहां पे चार्ज पड़ा हुआ है माइनस q4। तो अब टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का वो एल्जेब्राइक सम होगा, वेक्टर सम नहीं, एल्जेब्राइक सम होगा। वेक्टर क्यों नहीं होगा? बिकॉज चार्जेस खुद scalar quantity होती है, they are the scalar quantities. This we have done earlier, right? So total charge of the system, which is denoted by capital Q, this will be equals to plus Q1 minus Q2 plus Q3 and minus Q4. You can directly add all these charges. This is called additivity of charges, right? Simple sa concept hai. Now quantization of charge. Now what do you mean by quantization of charge? It means that the total charge of the body, the total charge कितना होता है? कैपिटल Q. The total charge of a body is always an integral multiple. The total charge of a body is always an integral multiple. Of the basic unit of charge, which is E. जो हमने पहले पढ़ा था, whose value is 1.6 into 10 raised to minus 19. तो कोई भी चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, टोटल जो चार्ज होगा that will always be an integral multiple of E. Why is that? Because see, there is a body, right? We know that in a body, if it has to be charged, that means there is one proton, right? Either one proton, either two protons, or either three protons, right? टोटल कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं. वी कैन नॉट से कि देयर विल बी 1.5 प्रोटॉन, राइट, और देयर विल बी 0.5 प्रोटॉन. इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, सो देयर विल बी 2 प्रोटॉन्स और 3 प्रोटॉन्स. दैट मीन्स एन इंटीग्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट. एंड चार्जेस आर मेड ऑफ प्रोटॉन्स. ईच प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ E, right? So if we see the entire body, what will be the total charge? It will be an integral multiple of E, क्योंकि एक चार्ज एक प्रोटॉन होगा या 2 प्रोटॉन होंगे या 3 प्रोटॉन होंगे, उनका एक इंटीग्रल मल्टीपल ही तो होगा ना, राइट. सो टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, right? We can write this definition. Yeah, what you can do is you can go through the ebooks that are given to you, right? You can go through them. The total charge, this means that the total charge of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge E. Basic quantum of charge E. This is meant by quantization, right? So it will always be an integral. That means Q, let us do this a little later, conservation. That means Q will always be equals to either 0, because n can be 0, or plus minus 1e, or plus minus 2e, because plus minus means there can be one electron, 2 electrons, 3 electrons, right? That is why plus minus 3e. So it will be always an
integral multiple. It will always be an integral multiple, right? Now let us do a very simple problem on quantization of charge, right? Now the question says calculate the charge on an alpha particle. Now what is an alpha particle? Alpha particle is basically helium nucleus. Helium nucleus, right? Now what do you mean by helium nucleus? That means the electrons from the helium have been removed, right? Now we have to calculate the charge on this alpha particle. So if I talk about the helium nucleus, how many protons will be there? 2 protons will be there in the nucleus, 2 protons, and 1 proton means a charge of 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb. So 2 protons, the total charge Q on the alpha particle will be equals to 3.2 plus 3.2 because the charge is positively charged into 10 raised to the power of minus 19 coulomb, right? Now let us see the third property, which is conservation of charge. Conservation of charge का मतलब क्या होगा? Charge conserved रहता है, right? Now this property states that the total charge, first property, it can state that first thing is the total charge of an isolated system remains constant, right? The total charge of an isolated, now the isolated word is very important, right? The total charge of an isolated system remains constant. What do you mean by an isolated system? Isolated का मतलब क्या हो गया? This system is not interacting with any other body, right? This is completely isolated. So if there is an isolated body, the total charge in the body will remain constant, right? For example, there is a charged body. If we make this body touch with another body, obviously some charge will go into another body and then the total charge of this body will decrease. But if this is completely isolated, this charged body is completely isolated, it is not interacting with any other body, then in that case the total charge of this body will remain constant, right? And the second thing is the electric charges can never be created nor be destroyed, right? Charges cannot be created nor be destroyed. You cannot create an electron, right? You cannot create a proton. They can only be transferred from one body to another, right? If there is a neutral body, ऐसा नहीं है कि you can create some charges in this. What can happen is if there is a neutral body, this we have already done that, if we apply induction, what will happen? Positive charges will come over here and negative charges will come over here. But if we see the total charge, that is adding this and this, the total charge will remain 0, right? The total charge of the body will remain 0. It will not change. Is that right? And it can be transformed from one body to another. Now if I bring another conductor in contact with this, negative charge will get transferred over here, right? So in that case, what will happen if we take this away? Now this will become negatively charged and this will become positively charged. This entire body will remain positively charged, this will be negatively charged, right? So now this will become positively charged and this will become negatively charged. So what is happening? They are being transferred from one body to another, right? If negative charge is transferred, obviously this will become positively charged and this will become negatively charged. So these are the two important points about conservation of charge, right?